کیا ہوگا کہ وہ تمہیں مل جائیں گے جلدی۔ ایما اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ جس پر ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریار اسے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں۔ ایما اسے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریار سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے، اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، جب تم لوگوں کو بچے کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، اور اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم باپ نہیں بن سکتے تو تم مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی نیت کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ تم کس نیت کی مالک ہو، اگر مجھے اگر بھی اندازہ ہوتا نا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ تم نے صرف مجھ سے بغیر لالچ کے شادی کی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا، لیکن تمہاری لالچ کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی تم مجھے پسند ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنا راستہ دیکھو اور مجھے میرے راستے پر جانے دو۔ اور ایمل سے میں نے بہت محبت کی ہے اور نہ ہی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں نے صرف ایمل سے ہی محبت کی ہے، نہ میں تم سے کبھی محبت کر سکتا ہوں، نہ میں نے محبت کی تھی تم سے کبھی، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ ایمل سے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میں نے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے کسی لالچ کے ذریعے تم سے شادی کی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے، جب شہریار گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو ایما گاڑی جان بوجھ کر گاڑی کا ہینڈل گھمانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو۔ اس زبردستی میں جب وہ دونوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شہریار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ، شہریار ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے آفس سے نکلنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر ایما آ جاتی ہے۔ ایما اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو۔ جس پر ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ شیئر چیک کرنے آئی تھی جو تم نے مجھے دیے تھے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ شہریاروں سے کہتا ہے اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ تمہیں مل جائیں گے جلدی۔ ایما سے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما سے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ جس پر ایما سے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریاروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں۔ ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے، اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، جب تم لوگوں کو بچے کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، اور اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم باپ نہیں بن سکتے تو تم مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی نیت کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ تم کس نیت کی مالک ہو، اگر مجھے اگر بھی اندازہ ہوتا نا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ تم نے صرف مجھ سے بغیر لالچ کے شادی کی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا، لیکن تمہاری لالچ کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے میں
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आयमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उसे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आयमा आ जाती है। आयमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिस पर आयमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उसे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयार से कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। या शहरयार से कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आयमल को लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना। तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं? आयमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आयमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयारों से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा। मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज़्यादती ना करता। लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आयमा से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उसे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आयमा आ जाती है। आयमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिस पर आयमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उससे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयार से कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। या शहरयार उससे कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आयमल को लेने
लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना, तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं। आयमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आयमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उसे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयार से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा, मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज्यादती ना करता, लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आयमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आयमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आयमा से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उससे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता कि वहाँ पर आयमा आ जाती है। आयमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर आयमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उसे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयार उसे कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता, तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। या शहरयार उसे कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है, मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उसे कहती है कि नहीं तुम्हें मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आयमल को लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना, तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं। आयमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आयमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयार से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा, मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज्यादती ना करता, लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आयमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आयमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आयमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का
ہینڈل گھمانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو۔ اس زبردستی میں جب وہ دونوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شہریار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ، شہریار ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے آفس سے نکلنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر آئمہ سے کہتی ہے کہ میں وہ شیئر چیک کرنے آئی تھی جو تم نے مجھے دیے تھے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ شہریاروں سے کہتا ہے اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ تمہیں مل جائیں گے جلدی۔ ایما اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ جس پر ایما سے کہتی ہے کہ نہیں تمہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریاروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جب تم لوگوں کو بچے کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، اور اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم باپ نہیں بن سکتے تو تم مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی نیت کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ تم کس نیت کی مالک ہو، اگر مجھے اگر بھی اندازہ ہوتا نا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ تم نے صرف مجھ سے بغیر لالچ کے شادی کی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا، لیکن تمہاری لالچ کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی تم مجھے پسند ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنا راستہ دیکھو اور مجھے میرے راستے پر جانے دو۔ اور ایمل سے میں نے بہت محبت کی ہے اور نہ ہی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں نے صرف ایمل سے ہی محبت کی ہے، نہ میں تم سے کبھی محبت کر سکتا ہوں، نہ میں نے محبت کی تھی تم سے کبھی، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ ایمل سے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میں نے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے کسی لالچ کے ذریعے تم سے شادی کی ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ جب شہریار گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو ایما گاڑی جان بوجھ کر گاڑی کا ہینڈل گھمانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو۔ اس زبردستی میں جب وہ دونوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شہریار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ، شہریار ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے آفس سے نکلنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر آئمہ سے کہتی ہے کہ میں وہ شیئر چیک کرنے آئی تھی جو تم نے مجھے دیے تھے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ شہریاروں سے کہتا ہے اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ تمہیں مل جائیں گے جلدی۔ ایما سے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ جس پر ایما سے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریاروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے،
आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे ज़रा सा अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज़्यादती ना करता। लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है, और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आइमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उससे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आयमा आ जाती है। आयमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर आयमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे, कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उससे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयार उसे कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। शहरयार उससे कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आयमल को लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना। तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं? आयमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आयमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयारों से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा। मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है, और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज़्यादती ना करता। लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है, और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आयमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आयमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उसे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आयमा आ जाती है। आयमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर आयमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे, कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयारों से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी।
ایما اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے، جس پر ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں تمہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریاروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ ایما اسے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے، اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، جب تم لوگوں کو بچے کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، اور اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم باپ نہیں بن سکتے تو تم مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی نیت کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ تم کس نیت کی مالک ہو، اگر بھی اندازہ ہوتا نا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ تم نے صرف مجھ سے بغیر لالچ کے شادی کی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا، لیکن تمہاری لالچ کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی تم مجھے پسند ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنا راستہ دیکھو اور مجھے میرے راستے پر جانے دو۔ اور ایمل سے میں نے بہت محبت کی ہے اور نہ ہی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں نے صرف ایمل سے ہی محبت کی ہے، نہ میں تم سے کبھی محبت کر سکتا ہوں، نہ میں نے محبت کی تھی تم سے کبھی، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ ایمل سے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میں نے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے کسی لالچ کے ذریعے تم سے شادی کی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے، جب شہریار گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو ایما گاڑی جان بوجھ کر گاڑی کا ہینڈل گھمانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو۔ اس زبردستی میں جب وہ دونوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شہریار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ، شہریار ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے آفس سے نکلنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر ایما آ جاتی ہے۔ ایما اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ شیئر چیک کرنے آئی تھی جو تم نے مجھے دیے تھے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ شہریاروں سے کہتا ہے اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ تمہیں مل جائیں گے جلدی۔ ایما سے کہتی ہے کہ ہاں میں نے پتہ کر لیا، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر آؤ، میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تم ہر سا واپس گھر چلی جاؤ۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم جیسے آئی ہو ویسے ہی گھر واپس چلی جاؤ۔ ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو تم عفان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ گھر جا رہا ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے، جس پر ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے پتا ہے تمہیں جو ضروری کام سے جانا ہے، تم ایمل کو لینے ہی جا رہے ہوگے نا۔ جس پر شہریاروں سے کہتا ہے کہ ہاں میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آج، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ کمرہ خالی کر دینا، تم نے وہ کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ ایما سے کہتی ہے کہ میں وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی اور تم ہی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ شہریار کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے تیار کر کر کیوں بٹھایا، اگر تمہیں اتنا ہی لیٹ لینے آنا تھا تو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی نہیں لینے آ رہا، میں کچھ دیر میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ ایمل کو یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتا ہے، اور جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایما اسے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، جب تم لوگوں کو بچے کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، اور اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم باپ نہیں بن سکتے تو تم مجھے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ شہریاروں سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی نیت کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ تم کس نیت کی مالک ہو، اگر بھی اندازہ ہوتا نا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ تم نے صرف مجھ سے بغیر لالچ کے شادی کی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا، لیکن تمہاری لالچ کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تم
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आइमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आइमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उससे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आइमा आ जाती है। आइमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर आइमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे, कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उससे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयार उसे कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। शहरयार उससे कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आइमल को लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना। तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं? आइमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आइमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयारों से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा। मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज़्यादती ना करता। लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आइमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आइमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर सकता हूँ, ना मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कभी। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ। आइमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने किसी लालच के ज़रिए तुमसे शादी की है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उससे झगड़ा करने लगती है। जब शहरयार गाड़ी चला रहा होता है तो आइमा गाड़ी जानबूझकर गाड़ी का हैंडल घुमाने लगती है और उसे कहती है कि गाड़ी रोको। इस ज़बरदस्ती में जब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और शहरयार की डेथ हो जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता, शहरयार अमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो अपने ऑफिस से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर आइमा आ जाती है। आइमा उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर आइमा उसे कहती है कि मैं वो शेयर चेक करने आई थी जो तुमने मुझे दिए थे, कि वो एक्टिवेट हुए हैं या नहीं। शहरयार से कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। अम्मा उससे कहती है कि हाँ मैंने पता कर लिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है तो तुम मुझे छोड़ कर आओ। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम हर साल वापस घर चली जाओ। शहरयारों से कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें अभी साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे आई हो वैसे ही घर वापस चली जाओ। अम्मा उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। शहरयारों से कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम अफान के साथ चली जाओ, वो घर जा रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। जिस पर अम्मा उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मुझे पता है तुम्हें जो ज़रूरी काम से जाना है, तुम आइमल को लेने
लेने ही जा रहे होगे ना। जिस पर शहरयार उसे कहता है कि हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उसे लेकर आऊँगा आज, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो कमरा खाली कर देना, तुमने वो कमरा खाली किया या नहीं। आयमा उसे कहती है कि मैं वो कमरा खाली नहीं करूँगी और तुम ही मुझे घर छोड़ कर आओगे। शहरयार को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आयमल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विमल उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो फिर तुमने मुझे तैयार कर कर क्यों बिठाया, अगर तुम्हें इतना ही लेट लेने आना था तो। शहरयारों से कहता है कि मैं माजरत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं लेने आ रहा, मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। अमल को ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है और जब वह आयमा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में आयमा उसे झगड़ा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर क्यों तुम मेरा मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब तुम लोगों को बच्चे की ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम मुझे रास्ते से हटा रहे हो। शहरयारों से कहता है कि तुम्हारी भी नीयत का अंदाज़ा हो गया है मुझे कि तुम किस नीयत की मालिक हो। अगर मुझे ज़रा अगर भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी आइडिया होता कि तुमने सिर्फ मुझसे बगैर लालच के शादी की है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये ज़्यादती ना करता, लेकिन तुम्हारी लालच का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता देखो और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो। और आयमल से मैंने बहुत मोहब्बत की है और ना ही मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। मैंने सिर्फ आयमल से ही मोहब्बत की है, ना मैं तुमसे